Hello, good evening, all of you. Good evening, sir. Today we are going to conclude this topic. Okay, we are going to conclude this particular chapter. So today I'm going to discuss about electrical properties of solids. Right? I'm going to discuss about electrical properties of solids. Okay. Now, Yes, sir. depending upon this conductivity, the solids can be classified into various categories. Right? Okay, so there are some solids which are very, very, very good conductors of electricity, and these are classified. These are known as conductors, right? Which are very, 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 very good conductors of electricity. Okay, so these are known as conductors. So on the other extreme, we have solids which does not conduct electricity at all, which are non-conductors of electricity. मतलब जैसे wood हुआ, plastic हुआ, they are non-conductors. Okay, so these are known as insulators. These are known as insulators. Okay, whose conductivity मतलब extremely low. These are known as insulators. Now, in between these two extremes, we have another category of solids whose conductivity lies between those of conductors and insulators, and these are known as semiconductors. They are known as semiconductors. So in this particular topic, we shall be mostly studying about semiconductors. Okay. So there are three types of solids: conductors. Now, conductors, again, the conductivity of conductors, they lie within the range of, इसका range याद करना पड़ेगा, they lie within the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Right? So the conductivity of conductors is extremely high, 10 to the power 4 to 10 to the power 7. Right? On the other hand, ये जो insulators होता है, उसका conductivity मतलब negligible. कितना 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse meter. So forget about these units. एक पूरा chapter ही पढ़ेंगे इसका हम लोग electrochemistry में. Just remember that I'm measuring the conductivity. ये conductivity range में दे रहा हूँ. And semiconductors, of course, it lies between these two. So it has semiconductors का होगा तुम्हारा 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. So it lies in between that of your insulators and your conductors. ठीक है? So on the base ये जो classification हम लोग कर रहे हैं, ये जो classification कर रहे हैं हम लोग on the basis of what, guys? Classification कौन सा basis में हो रहा है? On the basis of conductivity. Okay? So conductors का high conductivity होता है, they can easily conduct electric currents. So that insulators तो conduct करेगा ही नहीं. Whereas semiconductors, there are some metals which behave as semiconductors. There are some elements. There's a silicon. Okay, silicon is a well-known semiconductor. Okay. Sir, now let Sir, what is that conductivity 10 to the power 4 to 7? 10 to the power 7, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. And the insulators for 10 to the power 10 to the minus 20 to 10 to the minus 10. Yes, sir. Okay. Now, this has been explained on the basis of a theory which is known as a band theory. It's known as a band theory. Okay, so this has been explained on the basis of a theory which is known as a band theory.
this theory, जो metals, हम लोग metals का बात करें, हम लोग solids का बात करें. So we know solids में क्या होता है? There are shells. Okay, there are valence shells. Say the valence shells, मतलब the shells containing the outermost electrons are known as a valence shell. Right? And these are also known as a valence band. Right? These are also known as so there are two types of bands. According to this band theory, there are two types of bands. Right? एक होगा तुम्हारा valence band, and this valence band it contains valence electron. ये जो valence band होता है, it contains valence electrons. So there are electrons present out here. Right? So valence shell के ऊपर भी shells तो होता ही है. And these shells are known as here. These bands are known as here conduction bands. है. क्या band बोलते हैं इसको हम लोग? Conduction band. इसको बोलते हैं हम लोग conduction band. And the यहाँ पर जो energy difference हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं energy gap. इसको बोलते हैं हम लोग energy gap. Energy gap बोलते हैं इसको. Okay, fine. So there, according to the band theory, there are two types of band. एक है valence band, which contains. I'm not going into details about this band theory. आएगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं, छोड़ दो. So valence band में क्या present होता है? Valence electron, outermost electron. Okay, and above the valence band, okay, above the valence shell, there are another shells which are known as a conduction band. वो shells को बोलते हैं हम लोग conduction band. ठीक है? So now what happens is, according to this band theory, when an electron moves from your valence band to the conduction band, whenever the electron jumps from the valence band to the conduction band, क्या होगा? Electrons move आ रहा मतलब it conducts electricity. Now, in the case of conductors, the energy gap between the valence band and the conduction band is very, 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 very small. ये जो energy gap होगा ना, it's very small. Or in some, or sometimes they may overlap as well. Right? So electrons, since the energy gap is very small, the electrons can easily move from the valence band to the conduction band. Right? So due to small energy gap, so I can just write down out here. So due to small energy gap, the electrons can easily move from the, कहाँ से कहाँ move कर सकता है? From the valence band to the conduction band. Okay, so due to very small energy gap, the electrons can easily move from the valence band to the so they are good conductors of electricity. क्योंकि electrons can easily move from valence band to conduction band. ठीक है? Electrons आराम से move कर पाएगा. क्यों electrons आराम से move कर पा रहा है? Due to small energy gap, due to small energy difference, due to very, 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 very small energy difference. ठीक है? समझ में आए? So इसी तरीके से तुम insulators का explain करो. How will you explain insulators then? So why they do not conduct electricity? Now the reason being is that in insulators, the energy gap between the valence band and the conduction band is very, 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 very high. यहाँ पर जो energy difference है, it's very high. So high energy gap. There's a very, very, very high energy gap. So the energy gap is so much that under no circumstances the electrons can jump from the valence band to the conduction band. Electrons jump ही नहीं कर पाएंगे. So electrons cannot jump. So that is why they cannot conduct electricity. According to this theory,
In case of insulators, the energy gap between the valence band and the conduction band is so high that under no circumstances the electrons can jump to the conduction band. मतलब इतना एनर्जी गैप ज्यादा है, इतना एनर्जी गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाएगा तुम्हारा कंडक्शन बैंड में. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है? Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, what are these bands made up of? बैंड्स मतलब देखो, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बैंड्स मतलब क्या है? जैसे एटम्स में शेल्स होता है ना, शेल्स, आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं. उस आउटर मोस्ट शेल का भी ऊपर तो शेल तो होगा, शेल तो होता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है. सो वो शेल को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं. तो नाम दिया वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ठीक है? So I'm not going to details. Details में जाने से फिर मुझे molecular orbital theory approach लेना पड़ेगा. Just remember, according to band theory, मतलब band मतलब एक जो shells containing the valence electrons are known as a valence band. ठीक है? And conduction कब होगा? When the electron jumps from valence band to conduction band. So sir, in conductors, the energy gap is less. Very less. So the electrons are free to move from valence band to conduction band. Insulators में very high. तो semiconductors में क्या होना चाहिए? Neither too high nor too low. ठीक है, एनर्जी गैप होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा. Okay, now see. Here. Now एनर्जी गैप कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन ordinary conditions में, under ordinary conditions, the electrons cannot jump to the conduction band. Under ordinary conditions, the electrons cannot jump to the conduction band. However, with the increase of temperature, with the increase of temperature, क्या होगा? With the increase of temperature क्या होगा? As the temperature increases, the electrons will gain energy. Okay, with the increase of temperature, the electrons will gain energy, and क्या होगा? And more and more electrons will jump into the, कहां पर जंप करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से more and more electrons will jump into the conduction band. More and more electrons will jump into the conduction band. Okay, ठीक? So टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तो they will be able to cross this energy gap easily. So such semiconductors whose conductivity increases with the increase of temperature are known as, or they are called, intrinsic semiconductors. They are called intrinsic
semiconductors. They are known as intrinsic semiconductors. Okay, so the conductivity of semiconductors can be increased by increasing the temperature. On increasing the temperature, the electrons can easily cross the energy barrier and they can move into the conduction band. So such semiconductors whose conductivity increases with the increase of temperature are known as intrinsic semiconductors. They are known as intrinsic semiconductors. So question answer time. What is the effect of temperature on semiconductors? Question I passed me boards level में. So what is the effect of temperature on semiconductors, guys? As the temperature increases, as per valence bond theory, as per band theory, more and more electrons will jump from the valence band to the conduction band. Hence, the conductivity of semiconductors increases with the increase of temperature. Such semiconductors are known as the intrinsic semiconductors. So copy करो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so one way of increasing the conductivity is by increasing the temperature, right? Okay, one way of increasing the conductivity is increasing the temperature. Okay, so I'm not doing this, huh? I love this. Yes, So sir. the conductivity of semiconductors can be increased in two ways. Right? Number one, तो हम लोग ने अभी पढ़ा by increasing the temperature, and it can also be increased by doping. Right? Doping मतलब क्या था? Doping मतलब क्या था? What do you mean by doping? Addition of keys. So the conductivity of semiconductors can also be increased by adding impurities, right? and इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं. Such semiconductors whose conductivity can be increased by adding impurities, they are known as extrinsic semiconductors. They are known as extrinsic semiconductors. Right? So conductors whose conductivity can be increased by adding impurities are known as extrinsic semiconductors. So now we shall study a bit about your extrinsic semiconductors. Right? Okay, now the answer, Sunda, it's too easy if you understand. It's very easy, in fact. Okay. So first of all, we should be knowing what are the elements present in group 13, 14 and 15. So, ये तीनों काफी important है. Group 13, group 14. किसको पता है? What are the elements present in group 13? Group 14, group 15. Well, what are the elements present in group 13? So non-metals. Non-metals. कौन सा? Can you name? So aluminium, magnesium. Boron, First element aluminum, I think is boron. boron, Boron,
aluminium, gallium, gallium, indium, helium. ग्रुप 40 वाला कार्बन का फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, silicon, जर्मेनियम, germanium, tin, lead. lead. lead, 15 वाला नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, nitrogen, फॉस्फोरस, phosphorus, arsenic, arsenic, antimony, and this one. और antimony. डोंट वरी अबाउट दिस, हाँ ये तो पढ़ना ही है हम लोगों को क्लास 12 का सिलेबस में है। ये दो क्लास 11 का सिलेबस में था, ये याद करना पड़ेगा ही। now देखो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। जो बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 जो कार्बन फैमिली, ये पता है आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड जो ग्रुप 15 होता है उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर, राइट राइट। सो नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन, राइट, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखो, सो आई विल ड्रॉ द सिलिकॉन आउट हियर। Let me explain you, it's so interesting. देखो, silicon, it belongs to which group, guys? So It 14. belongs to which group? Silicon 14. 14, correct. It belongs to group 14, right? So silicon, yes, it uses 4 electrons in bonding. है silicon का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 4 ही यूज किया बॉन्डिंग में। yes sir. So each silicon uses 4 electrons in bonding है, मतलब ये silicon का 4 इलेक्ट्रॉन है, ये silicon का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा मतलब silicon एक सेमीकंडक्टर है। दिख रहा है ना? Are you able to see this? दिखाई दे रहा है? Okay, now suppose you add a group 15 element, तुमने group 15 element ऐड किया। कौन सा एलिमेंट ऐड किया? सिलिकॉन में ग्रुप 14 में तुमने ग्रुप 15 वाला एलिमेंट ऐड किया। ग्रुप 15 मतलब आर्सेनिक ऐड किया। सपोज कौन सा एलिमेंट ऐड किया गाइस? आर्सेनिक। तो लास्ट क्लास में तो मैंने पढ़ाया था डोपिंग। व्हेन यू ऐड एन इम्प्योरिटी क्या होगा? सम ऑफ द एटम्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द इम्प्योरिटी। वही तो हो रहा था लास्ट क्लास में। क्या किया था? स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करने से क्लोराइड सोडियम आयन रिप्लेस हो रहा था। तो यहाँ पर तो सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। आर्सेनिक ऐड करिए तो सिलिकॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक। चलो यहाँ पर सिलिकॉन, वन ऑफ द सिलिकॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक। ठीक है, सिलिकॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का खुद के पास इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15। सो आर्सेनिक के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वर देयर? How many valence electrons were there? Huh? 3. Silicon group 15, arsenic group 15, कितने valence electron? Group 15 का 5 इलेक्ट्रॉन था आर्सेनिक का। ग्रुप 15 में बिलोंग करेगा ये। Now out of the 5 electrons, 4 electrons are used in bonding है। 5 इलेक्ट्रॉन था आर्सेनिक के पास में। So आर्सेनिक में 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज किया। Now one of the electron is free. One of the electron is free. So due to excess of electrons, due to presence of free electrons, the conductivity of this semiconductor increases to many times. क्या हो रहा है? So out of the 5 electrons, 4 are used in bonding. Out of the 5 electrons, 4 तो bonding में use हुआ है, लेकिन एक तो free हुआ। So the presence of this free electron increases the conductivity. The presence of this free electron increases the conductivity. Okay, fine. अच्छा, So can you repeat?
So I'll write it down. Okay, sir. So I'll just write it down. I'll just write it down. समझ में तो आया ये? It's understood? Yes, sir. So I can just write it down on adding a group 15 element, say arsenic. Okay. Which has how many electrons? Which has 5 electrons in the valence shell. Okay, so out of 5 electrons, 4 electrons are involved in bonding, while the last electron is set free. एक electron तो use नहीं हुआ है bonding में, so it is set free. Okay, so these extra electron conduct electricity. So these extra electron conduct electricity. So these type of conductors which conduct electricity due to free electrons, they are known as a what type? They are known as a N-type semiconductors. Right? They are known as a N-type semiconductors. Okay, N मतलब normal. जो normal conductors में conductivity कैसा होता है? Due to movement of electrons. So यहाँ पर भी conductivity movement of electrons की वजह से हो रहा है. So these are known as a N-type. So देखो whenever you dope with an element having extra electrons, जैसे यहाँ पर 4 था, you are doping with an element having 5 extra electrons. So whenever you dope with an element having higher number of valence electron, you get an N-type. क्यों मिल रहा है? क्योंकि some electrons will be obviously set free, some electrons are free, and due to the movement of these free electrons, the conductivity increases. ठीक है? I think it's understood. Yes. पक्का So, ये रट्टा type of रट्टा मारने से confuse semiconductors ना are भाई. called N-type semiconductors. हाँ मतलब N मतलब normal type. Normal मतलब semiconductor में conductivity जैसे copper wire में why is copper wire conductivity? Due to movement of electrons. So normally conductors का conductivity is due to movement of electrons. So यहाँ पर भी conductivity is due to movement of electrons. जो normal way में होता है, तो इसीलिए इसको normal और N-type semiconductors बोलते हैं. So remember, when you dope an element with an element having higher number of electrons, हमेशा तुम लोगों को क्या type मिलेगा? N-type. So this is the explanation. ठीक है? Sir. Fine? Sir. Yes, tell me. Sir, can we do this doping with any other elements of group 13 and 14 also? हाँ मैं दिखा रहा हूँ. मतलब ग्रुप 14 का तो 14 से डोप करने से तो कुछ होगा नहीं. ग्रुप 14 का तुमको डोप करने पड़ेगा इधर 15 और 13 से. तो 14 का 14 से डोप करने से क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे एलिमेंट का भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होगा. एज इट इज रहेगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है. Yes. ना? So I'll drop this. I'll drop this. Yes, sir. I'm dropping this now. Yes, sir. Okay, so now again I'm drawing silicon. So instead of arsenic और कुछ एलिमेंट भी दे सकते हैं तुम लोग. ठीक है? मैंने आर्सेनिक चूज किया ग्रुप 15 का. ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं तुम लोग. This is for the group 13 को लागी experiment, sir. हाँ.
ओके ये होगा। तो एज बिफोर अगेन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, वही है ना। now यहाँ पर डिफरेंस है, now I am doping with a group 13 element है। so I am doping with India, एक चूज किया मैंने ऐसे रैंडमली इंडियम। हाँ, Yes, sir. so now indium group 13 indium का how many electrons are there? Group 13 का 3 electrons. 3. so 3 electrons है, so this silicon will be replaced by indium में, it will be replaced by indium। so indium का 3 इलेक्ट्रॉन था, चलो मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, खाली 3 ही इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी रहेगा, एंड these are not filled up by electrons, so these are known as your positive holes। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर। so when you dope group 14 with a group 13 element, group 13 element has only 3 electrons, so a positive hole will be created। it has only 3 electrons, चार्ज रहेगा बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, सो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव होल क्रिएट। समझ में आ रहा है? now what will happen to fill up these holes? यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है, so यहाँ का इलेक्ट्रॉन it can come out here, so the electrons can move out here। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर होल्स क्रिएट होगा फिर से। सो अब ये होल फिलअप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, फिर से यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा। सो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव होल्स भी क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आ रहा है, होल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी कैन से the conductivity is due to the movement of positive holes। actually it is due to the movement of electrons move हो रहा है, लेकिन इसके साथ positive holes भी move हो रहा है। so these type of semiconductors whose conductivity is due to the movement of positive holes, they are known as your p-type semiconductors। they are known as your p-type semiconductors। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा n-type था, ये p-type। so whenever you dope element with an element containing lesser number of electrons, due to the creation of positive holes, the conductivity will increase। due to the creation of positive holes, okay, conductivity will increase, and such semiconductors are known as your p-type semiconductors। such conductors will be known as your p-type semiconductors। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में what type of questions you can, so what are n-type? n-type मतलब the semiconductors whose conductivity is due to the movement of free electron। n-type, when do you get an n-type? when you dope an element with an element having higher number of electrons। mechanism hardly पूछेगा। what do you mean by p-type? p-type semiconductors are those whose conductivity is due to the movement of positive holes। when do you get p-type? whenever you dope an element with an element containing lower number of electrons। whenever you dope an element, whenever you add an element having lesser number of electrons, you get a p-type। whenever you add an electron having greater number of electrons, you get n-type। समझ में आ रहा है? तो आ सकता है तुमको क्वेश्चन, what happens when silicon is doped with indium? इंडियम पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है, नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। इंडियम पता है ग्रुप 13, सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन, इंडियम का 3 इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन में से होल क्रिएट होगा पॉजिटिव। व्हाट हैपेंस व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद से आर्सेनिक? आर्सेनिक ग्रुप 15 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का 4, एक एक्स्ट्रा है आर्सेनिक के पास, सो एन टाइप। सिंपल सा, ठीक है? Means like in n-type semiconductor, we will dope with valency which is higher.
Yes, whenever you add an element having greater number of valence electron, you get n type. Whenever you add an element containing lesser number of valence electron, you get p type. Bas. So go through your book, NCERT, as well as your reference book. You'll get the answers out there. What do you mean p type, n type? Okay, so the explanation part I have done. Yes, sir. So explanation part I have done. Sir, in exam we draw the diagram also. If you get ample time, you can draw, but it's better you don't get time. Okay, so no need to draw. और time मिला तो draw कर देना. It depends ना. 2 marks का दिया तो yes you can draw. 2 marks का दिया तो you can 1 marks के लिए क्या draw करोगे? Yes, sir. और तुम लोग का diagrammatically question दे सकता है ये the above diagram illustrates what type of semiconductors. Sir. और the above diagram illustrates what type of semiconductors. मतलब दुनिया भर का question है. ठीक है? Fine? Yes, sir. Okay, chalo. So please go through your NCERT as well for your language. Okay, so it's not possible to dictate everything out here. Okay, so I'm just explaining it. So exam idea खरीदा होगा अभी तक तो. So go through your exam idea or Arian, whichever reference book you have bought for your answers. Okay. Sir, to okay, solutions to chapter now. What is that torr? Funny. Torr, I will explain. The torr is a unit of pressure. Unit of pressure. Torr unit of pressure. Yes, sir. So last topic right now. Magnetic properties of solids. Magnetic properties of solids. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, so देखो फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. So if a current moves in a circular coil, what will be generated? क्या generate होगा? क्या field? Magnetic field है. Magnetic field है. Okay. So an electron also moves in circular orbits around the nucleus. Huh? Electrons are electrically charged. So when an electron moves around the nucleus in circular orbits, a magnetic field will be created. A magnetic field is created. Okay, a magnetic field is created. So just write it down. The electron in an atom, okay. So a moving electron may be considered to be a small current. A moving electron may be considered to be a what? Small current. It carries charge, so carriers of electric current. Okay, generating a small magnetic field. Generating a small magnetic field. Generating a small magnetic field. So each electron will have its own magnetic field. It will behave as a mini electron. It will behave as a mini magnetic. So it will have its own magnetic field. Okay, it will have its own magnetic field. Okay. Achha, so each electron may be thought of tiny magnet
So we can just write down each electron may be thought of a tiny magnetic. Each electron may be thought of a tiny magnet, can be considered to be a tiny magnet associated with a permanent. अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये तक लिखना भी पड़ेगा. अच्छा लिखता है लिख लो और बैठे छोड़. No need of this. Thought of a tiny magnet. Okay. So I think this understood क्यों ये बोल रहा हूँ मैं? Because electron charged है, it is moving around the nucleus in circular orbit, so it will generate a magnetic field. और जैसे magnets, it will generate a magnetic field. Electron is also generating a magnetic field. So each electron may be considered to be a small magnet. A small magnet. ठीक है? Okay. So on the basis of their behavior towards an external magnetic field, so on the basis of their behavior, towards your external magnetic field, again we are classifying the solids. So classification का basis क्या है तुम्हारा? On the basis of their behavior towards the external magnetic field. मतलब each electron का अपना ही magnetic field है. So तुम external magnetic field में रखोगे तो so it will obviously show some behavior. So on this behavior again the solids are classified into the following categories. We can classify the solids into the following categories. Okay, क्या क्या category है अब देखेंगे हम लोग. So number 1 लिख लो paramagnetic substance है. Paramagnetic substance. अच्छा paramagnetic substance मतलब क्या है? Paramagnetism arises due to presence of unpaired electrons. Right? So paramagnetic substances, they have one, or just write down, they possess one or more unpaired electron. So एक से ज्यादा unpaired electron है इसको paramagnetic. Okay, so example sodium ion है. सोडियम आयन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम 10. So how, what is the electronic configuration guys? 1s2, 2s2, 2p5. 2p6. 2p6. So does it have any unpaired electron? No. So this is not paramagnetic. This is not paramagnetic. Now I'll consider another element, say ferric ion. आयरन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 26 है. इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2. इसका कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट 3d6 4s2. सो आयरन ट्राइपॉजिटिव का क्या होगा गाइस? Fe ट्राइपॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ट्राइपॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गायब. इसका 3d5 अच्छा 1s छोड़ दो, लास्ट का बता रहा हूँ मैं. 1s में तो होगा ही होगा. लास्ट का बता रहा हूँ मैं. 3d5 राइट. 1 2 3 4 5. सो
5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से भी पैरामैग्नेटिक, 2 होने से भी पैरामैग्नेटिक, 3 होने से भी पैरामैग्नेटिक, 4 5 होने से भी पैरामैग्नेटिक। So paramagnetism arises due to presence of one or more unpaired electron atoms. So Na positive is not paramagnetic, whereas Fe tripositive is a paramagnetic substance. Okay, so ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका खुद का एक स्पिन मूवमेंट होता है. Okay, so I'm not going into that details. So ये just याद कर लेना points. So next याद करें, they are weakly attracted. They are weakly attracted by magnetic lines of force. They are weakly attracted by magnetic lines of force. So if you keep in an external magnetic field, the external magnetic field का force होता है lines of force, it will weakly attract this paramagnetic substances. Okay, so kindly go through the examples. So all these compounds, their Fe tripositive ions are present. These are paramagnetic, and say Fe tripositive, Cr tripositive, and remember one very important example. Oxygen is also paramagnetic. Class 11 में किया था तुम लोगों ने? Oxygen का pi anti bonding में 2 unpaired electron होता है, according to molecular orbital theory. I'm not going to that, of course. Just याद करें ना, oxygen paramagnetic है, ठीक है? Yes, sir. Oxygen is paramagnetic. Oxygen is paramagnetic. So liquid oxygen को liquefy करके तुम magnetic field में रखोगे तो liquid oxygen will be attracted by magnets. Liquid oxygen will be attracted by magnets. Why? It's paramagnetic. So chromium bani paramagnetic. Cr+3 unpaired electron था, करके देखो unpaired electron होगा, जिसका भी unpaired electron होगा paramagnetic. So unpaired तो खास में क्या chromium है ना sir? Chromium. It's paramagnetic, huh? Yes, sir. देखो chromium का atomic number 24 है, इसका configuration 3d5 4s1 होगा. Chromium +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम, so 3d3 होगा ना. 3d मतलब तो 5 3d ऑर्बिटल, 3 ही में ऑक्युपाइड है, so 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव में. क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव मतलब 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. Yes. ठीक है? Okay, so next is diamagnetic substances. So diamagnetic substance, they have all paired electrons. Say, this arises due to this diamagnetism arises due to absence of unpaired electrons. So diamagnetism arises because of unpaired. Diamagnetism arises because of unpaired electrons. Say, okay. Yes, sir. ठीक है? और सोडियम diamagnetic है. So they are weakly repelled. They are weakly repelled in external magnetic field. In an external magnetic field, they are weakly repelled. ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं आएगा बोर्ड लेवल में, याद कर लेना. और examples, please go through it. So NaCl,
NaCl. NaCl मतलब sodium ion is present out here. Okay. Yes, sir. So now 3 more. Okay, so I'm rubbing this pan a minute. Okay. Okay. Now just write down a line or two. Just write down a line or two. लिख लो. So in a solid state, okay, in a solid state, obviously we are studying the solid state. The metal ions are grouped together. The metal ions are grouped together. How are they grouped? They are grouped together in small clusters, right? And these small clusters are called domains. They are grouped together in small clusters called domains. So they are grouped together under small clusters called domains. Right? And each domain acts as a tiny magnet. Right? And ये जो cluster है, each domain act as a tiny magnet. Right? And ये जो unmagnetized substance होता है, in an unmagnetized substance, क्या होगा? The domains और जो tiny magnets होता है, the domains are arranged randomly. They are arranged randomly. Okay, unmagnetized substance where domains are arranged randomly. Now, in an external magnetic field, depending upon how these domains will be arranged, right? जब तुम वही substance को एक magnetic field में रखोगे, depending upon how these domains are arranged, now again we can classify the substances into the following categories. Okay. Now, number again, I'll write down the C. Ferromagnetic substance. Okay, ferromagnetic substances. So these are strongly attracted by a magnetic field. They are strongly attracted by a external magnetic field. Okay. So just write down such substances shows permanent magnetism even in the absence of okay, so they will act as a magnet even in the absence of an external magnetic field. So whatever positions we can expect here, let us straight away come back to that point. Okay, now जब तुम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब तुम ये सब्सटेंस को एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, जितना भी इसका डोमेन है ना, दे विल ऑल बी अरेंज अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस। पहले रैंडमली अरेंज होगा, बट जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ऑल द डोमेन्स विल बी अरेंज्ड इन अ सेम डायरेक्शन। सो मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड दे आर नॉट ऑपोजिंग ईच अदर, राइट? दे आर बीइंग एडेड। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, सो दे विल ऐड अप giving rise to a strong magnetic character. So they will behave as a magnet in the presence of a magnetic field, और ये remove करने के बाद भी this magnetism will be retained, right? So यहाँ से क्वेश्चन आएगा, how are the domains arranged? The domains in the presence of a ferromagnetic substances में क्या होगा? The presence external magnetic field में the domains are aligned in the same direction. The domains are aligned in the same direction. They will be aligned in the same direction. Okay, so the magnetic dipoles or the domains, they are aligned in the same direction. Okay, that is why they give rise to a strong magnetism. So ये हुआ तुम्हारा ferromagnetic substances. So diagram याद कर लेना. Again I am telling you, diagram याद कर लेना. ये diagram बहुत important है. Diagram से ही question आएगा. ओके, सो तुम्हारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा? सो देखो, एक डोमेन ये डायरेक्शन में अलाइंड है, दूसरा डोमेन ये डायरेक्शन में अलाइंड है। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा? दे विल कैंसल आउट ईच अदर, राइट? दे विल कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर तो एक ही डायरेक्शन में था, सो दे वर एडेड, सो इट गिव राइज टू अ स्ट्रांग मैग्नेटिक मोमेंट। सो यहाँ पर तो दे आर इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, सो दे विल कैंसल आउट। सो देयर आर द मैग्नेटिक domains are in opposite directions in equal number, right? So equal number of domains are in opposite directions. So 10 ऊपर है तो 10 नीचे होगा, so they will cancel out each other. So net magnetic moment क्या होगा? 0 होगा. So okay, यहाँ पर क्या लिखोगे? Alignment of magnetic moment in opposite direction results in zero magnetic moment. है. So alignment of magnetic moments are aligned in opposite direction will give zero magnetic moment. It will give zero magnetic moment. Okay. So zero magnetic moment क्यों है? It's due to equal number of parallel and anti-parallel magnetic moments. Zero magnetic moment क्यों है? इसका cancel करेगा ये, इसका cancel करेगा ये. So it's due to equal number of parallel and anti-parallel magnetic moments. So due to equal number of, we can say zero magnetic moment क्यों हो रहा है? Due to equal number of parallel and anti-parallel magnetic moments. ठीक है? So ये फिगर देगा, तुम लोगों को पहचान है what type of substances. So last but not the least तुम्हारा आएगा, तुम लोग खुद बोलोगे मुझे, फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी FERRI. देखो फेरो में क्या रहता? The magnetic moments were all aligned in the same direction, hence they added up to give you a net magnetic moment. Okay, and they are strongly attracted by magnetic field. So यहाँ
पर क्या होगा, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा जीरो है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जीरो है। ओके, यस सर। अब मैं ड्रॉ करूंगा, तुम लोग खुद बताओगे। So यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट्स हाउ आर दे अलाइंड? They are aligned in opposite directions but in unequal number. यहाँ पर they were aligned in opposite directions in equal number. Yes, जैसे 10 ऊपर था तो 10 नीचे था, but यहाँ पर they are aligned in opposite direction, ठीक, but in unequal number. They are aligned in opposite directions in the unequal number. So do you think there will be a net magnetic moment out here? No, Do you sir. think there will be a net magnetic moment? No, sir. Yes, क्योंकि एंटायरली कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 10 ऊपर है तो 10 पैरेलल है तो उससे 5 एंटी पैरेलल है, हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो दे वर एग्जैक्टली कैंसलिंग आउट ईच अदर क्योंकि अनइक्वल इक्वल नंबर में ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पर दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बट इन अनइक्वल नंबर है। सो यस, ड्यू टू, लिख लो यहाँ पर, लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल, due to unequal number of parallel and anti-parallel magnetic moment, these kind of substances, it exhibits, yeah, a small net magnetic moment. Okay, so it's as a ferrimagnetic substances. So again, I'm telling you, if you just go through your past year questions, you'll come to know what type of questions we can expect. So 90% तुम लोग का यहाँ diagrammatically question देगा, 90% diagrammatically. ये देगा explain the magnetic carrier, what type of substances are those. Okay, so ये देगा what type of substances are those. देखो सब एक ही direction में होने से add होगा, it will give you a magnetic moment जो बड़ा होगा magnetic moment. Opposite पैरेलल एंटी पैरेलल है इक्वल नंबर में, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा। ओके, फेरीमैग्नेटिक में पैरेलल और एंटी पैरेलल है बट इन अनइक्वल नंबर, so they will not entirely cancel out each other, right? They will not entirely cancel out each other, so it will generate a small magnetic moment, ठीक है। So diagrammatically questions might come, ठीक है। So this finally concludes our short topic on the electrical and magnetic properties. So there are every chance that one question might come from these two topics. Say, एक question आ सकते हैं दोनों से. It's very easy topics. You can easily attempt N-type, P-type semiconductors, magnetic behavior. Just याद कर लेना है diagrammatically. Okay. So we have finally concluded solid state.